This recording is protected by copyright. Duplication is strictly prohibited by law. Wow, what do I need to do to become a diamond? कन्वेंशन के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि हमने क्या करना होगा डायमंड जाने के लिए. They find a dream, they cried in front of me and they said they want to be successful. वो कहते हैं कि उन्होंने अपना सपना पा लिया है और आंखों से आंसू गिरते हैं. And they said, I want to do anything to be successful. और वो कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं सफल होने के लिए. Please tell me anything you tell me. आप हमको बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. And then it reminds me to a story with this young girl at high school. और एक स्टोरी था यंग गर्ल हाई स्कूल में. She didn't study, so she came and visit her teacher. वो बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी तो अपने टीचर के पास आई. So flirtatiously with a mini skirt, she came and approached the teacher. और टीचर मिनी स्कर्ट में और उसमें आकर टीचर से पूछी. And she was asking, teacher, I will do anything that you tell me to do. मैं आप कुछ भी करने को तैयार हूँ जो आप मुझे कहेंगी. As long as you can give me a pass. जब तक आप मुझे एक पास दे सकती हैं. And then, this young girl was like trying to seduce the teacher. और वो टीचर को थोड़ा सा सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी. And the teacher said, are you sure you want to know, what I tell you to do? तो टीचर ने पूछा कि वाकई तुम वो करने को तैयार हो जो मैं आपको कहूँगा? And you will do it? और आप करेंगी? Yes, she said. तो उसने कहा हाँ. And the teacher said, और टीचर ने कहा, study hard. और मेहनत से पढ़ाई करो. Well, so many of us trying to find a shortcut. हम में से बहुत सारे लोग शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं. After this kind of convention, so many people trying to become successful quick, and they want to do anything as long as it's a shortcut. और बहुत सारे लोग कन्वेंशन के बाद चाहते हैं कि हम जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन वो शॉर्टकट खोजते हैं. There is no such thing as shortcut. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है. You need to work hard. आपको मेहनत करना पड़ेगा. We are in a business of building a network. हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड करने के बिजनेस में. Building a big network, you cannot do it overnight. और एक बहुत बड़ा नेटवर्क रातों रात नहीं. It needs time. It takes process. थोड़ा सा टाइम लगता है और उसमें एक प्रोसेस है. That's why in the beginning, you cannot see the money. और इसीलिए शुरू में आप पैसे इसमें नहीं दिखाई देते आपको. Sometimes you are so frustrated. कभी आपको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है. And most of our friends, family don't believe in this business. और बहुत सारे हमारे रिश्तेदार और दोस्त इस बिजनेस पे विश्वास नहीं करते हैं. And then after so many months, years, you build this business and no result. और अब बहुत दिन तक आप काम करते हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकलता है. You're starting to doubt in yourself. और आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं. Whether it is the right business for you. कि ये आपके लिए एक सही बिजनेस है भी कि नहीं. But if you're thinking of being a network builder, लेकिन अगर आप एक नेटवर्क बिल्डर बनना चाहते हैं, maybe the way you would be different. तो आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा. To become a successful network builder, you need to have a lot of new applications coming into your business. एक सफल नेटवर्कर के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि आपके बिजनेस में नए लोग के एप्लीकेशन आनी जरूरी है. A lot of people complain that it's very hard to build this business. बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ये बिजनेस बिल्ड करना It's very hard to get PV. बहुत कठिन है पीवी आना. It's very hard to get people to come to this seminar. बहुत कठिन होता है लोगों को सेमिनार में लाना. It's very hard to get people to be on CEP. लोगों को CEP में डालना बहुत कठिन होता है. But the number one thing they need to focus is to get new apps first. लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि नए लोगों के एप्लीकेशन. New application is people coming into your organization. न्यू एप्लीकेशन का मतलब है नए लोग जो आपके बिजनेस में जुड़ रहे हैं. So just imagine, I think Amit mentioned about Facebook today. आज अमित ने फेसबुक के बारे में बताया. Facebook has 600 million members around the world. Maybe up to 800 million now. 800 मिलियन लोग फेसबुक में रजिस्टर्ड हैं. And its revenue is like $4 billion. और $4 बिलियन का रेवेन्यू होता है. So on the average it's like $10 million every day. तो $10 मिलियन एवरी डे उनका इनकम है. They sell products through the Facebook. फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचते हैं. So who have ordered products from Facebook? तो फेसबुक से कितने लोगों ने प्रोडक्ट बेचा है इस रूम? Anybody? कोई भी है इस रूम में जिसने फेसबुक से प्रोडक्ट लिया है? No.
आप में कोई भी There must be one or two, right? एक A दो few जरूर people. होंगे। Can you imagine out of these thousands of people, not many people order products from Facebook, and yet Facebook has $4 billion US sales. कितना आश्चर्य की बात है कि 4000 लोगों में बैठे हुए बहुत कम लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं और फिर भी वो इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं Because they have big network. क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। So it doesn't matter whether we want to build this business or not, Amway is still having almost $1 billion every month turnover. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है सामान, कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क कारण $1 बिलियन का टर्नओवर हर महीना होता है। Because if we don't do it, other people will do it with a bigger network. हम नहीं करेंगे तो कोई और ना कोई करेगा बड़े नेटवर्क के द्वारा। So how do we increase our network? तो हम अपने नेटवर्क को कैसे बड़ा करेंगे? How can we make a big network? तो हम एक बड़ा नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे? It starts with yourself. तो सबसे पहले तो ये आपसे ही शुरू होगा। You have to show 15 plans आपको 15 a month at least. Because in this business, you need to have people duplicate you. आपको कम से कम 15 प्लान महीने में दिखाना You होगा। cannot do yourself. आप अपने से नहीं कर सकते, लोगों को डुप्लीकेशन सिखाना I होगा। can show up to maybe 60, 70 plans a month. मैं अकेले 70 प्लान 60-70 प्लान महीने में दिखा सकता हूँ। But if you start talking about showing 200, 300 plans a month, लेकिन 200-300 प्लान दिखाने की बात अगर होगी तो it's impossible for you to do it yourself तो ये for a long period of time. तो ज्यादा समय तक आप लंबे समय तक इतना प्लान अकेले नहीं दिखा सकते। But if you have 10 people in your organization, each showing 15 plans a month, लेकिन अगर आपके बिजनेस में 10 लोग हैं जो 15 प्लान महीने प्लान दिखाते हैं, then you will have already 150 plans every month in your organization. तो 150 प्लान हर महीने आपके बिजनेस में आराम से होंगे। Then there will be a lot of people joining. तो आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग आएंगे। But because it is a duplication business, you have to do 15 plans first. पर चूंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको सबसे पहले अपने से शुरुआत करनी होगी 15 प्लान से। You cannot expect your group to do 15 plans if you don't do it. आप अपने ग्रुप से 15 प्लान दिखाने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते अगर आप खुद ही 15 प्लान नहीं दिखा रहे हैं। In fact, your groups will only do half of what you do. असल में तो आप जितना करेंगे आपका ग्रुप उससे आधा ही काम करेगा। So you need to do 30 plans a month. तो अच्छा होगा कि अगर आप 30 प्लान महीने में दिखाएं, So that there will be people doing 15 plans a month. ताकि कम से कम आपके लोग 15 प्लान तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। So is it hard to show 15 plans a month or 30 plans a month? तो क्या 15 प्लान 30 प्लान महीने में दिखाना बहुत कठिन है? Showing one plan, it only needs at most half an hour. एक प्लान दिखाने में ज्यादा आधा घंटा ही टाइम लगता है। Check with your upline. अपने अपलाइन से चेक करो। But for me, if I show one-on-one plan, if it's more than half an hour, it's too long already. अगर मैं 1-to-1 प्लान दिखाता हूं और अगर आधे घंटे से ज्यादा होता है तो एक लंबा प्लान है। So showing 15 plans, 20 plans, 30 plans a month, it is like only one plan a day for half an hour is nothing. तो एक प्लान आधे घंटे के लिए रोज अगर दिखाना है तो कुछ भी नहीं है। So why is it not many of us showing 15 plans a month? तो फिर हम में से बहुत सारे लोग 15 प्लान क्यों नहीं दिखाते हैं? It's not the activity of showing plan that is hard. एक्चुअली प्लान दिखाने की एक्टिविटी कठिन नहीं है। The fact that we have to show the plan within our time that is supposed to watch movie, watch TV, having a nice time in the family, that what make it hard. लेकिन हमें वो जो समय निकालना है उस टाइम पे जहाँ हम मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उससे समय निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। After office, we have to show the plan. ऑफिस के बाद हमें प्लान दिखाना है। During weekends, we have to show the plan. छुट्टी में हमें प्लान दिखाना है। Whilst everybody else are doing something else, watching movie, being with their family, it's nicer over there. बाकी सब लोग जब दूसरा लोग अपने अपने परिवार के साथ दूसरा काम कर रहे थे उस समय आपको ये काम करना होता है। And the other thing that makes it hard to show the plan regularly, consistently, because there are so many rejection. और दूसरी चीज जो इस कठिन हो जाता है काम दिखाना है कि आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं। If every plan we show, people join us, wow, everybody want to show many plans. अगर हर प्लान में लोग जुड़े तो आप तो हर आदमी को दिखाओगे प्लान। Unfortunately, there are more no's than yes. लेकिन दुर्भाग्यवश आपको ज्यादा ना सुनने पड़ते हैं और हाँ कम सुनने पड़ते हैं। So after showing 15 plans, तो 15 प्लान दिखाने के बाद and all the 15 say no, और सारे 15 अगर आपको ना बोलते हैं,
will you want to do the 16th plan? तो क्या आप 16वां प्लान दिखाना चाहोगे? Some of us feel that, wow, the number 16 will also reject us. हम में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये 16वां नंबर भी हमें रिजेक्ट कर देगा. Just because the first 15 rejected you, it doesn't mean number 16 will also reject you. सिर्फ इसलिए कि 15 लोगों ने आपको ना बोला, इससे इसका मतलब ये नहीं कि 16 आदमी भी आपको ना बोलेगा. Because number 16 doesn't know number 15. क्योंकि 16वां नंबर को तो पता नहीं कि 15वां ने आपको रिजेक्ट किया है. They will not collude one another. वो आपस में बातचीत नहीं करने वाले हैं. So the secret of this business is doing consistently even though there is no result. So इस सीक्रेट इस बिजनेस का यही है कि आपको कंसिस्टेंटली 15 प्लान दिखाना है, चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए. And I've seen so many diamonds in this business, they have experienced 60 rejection in a row. और मैं बहुत सारे डायमंड्स को जानता हूं जिनको 60 रिजेक्शंस लगातार मिली हैं. Can you imagine showing 20 plans after this convention in a row and all say no? 30 plans, all say no's. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 20 से 30 प्लान आपको निरंतर ना मिले और फिर भी आप प्लान दिखाते रहे? If you can show 60 plans in a row and all say no and you still want to do this business and still do number 61, then I'm very sure your quality is already a diamond. अगर आप 60 प्लान लगातार दिखाते हैं, ना मिलता है और फिर भी आप और प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं, आप डायमंड के लिए हो. So rejection is normal in this business. So rejection normal है इस बिजनेस में. If you want to build this business, you have to face rejection. अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो रिजेक्शन से Just the same as you want to swim, you have to ready to get wet. जिस तरह से तैरना चाहते हैं तो भीगने से आप नहीं डर सकते, उसी तरह से इस That's why we have to strengthen ourselves through the books, CDs and the meetings and association with our upline. इसीलिए आपको अपने को मजबूत करना है सीडी बुक्स और अपने अपलाइन के टीचिंग्स के द्वारा. Fortunately, when we find so many rejection, we almost giving up in the business, then we don't want to listen to CDs anymore. जब हमें ज्यादा रिजेक्शन मिलता है तो हमें सीडी और बुक भी पढ़ने का मन नहीं करता है. This is the secret. यही सीक्रेट है. The time when you feel lazy listening to CD, जिस वक्त आपको सीडी और किताब सुनने का मन नहीं करता, that is the time when you need the most in listening to CD. वही वो समय है जब आपको सीडी और किताब पढ़ने की और सुनने की सबसे ज्यादा The जरूरत है. time when you feel lazy to contact your upline, जिस समय आपको आलस लगता है अपने अपलाइन से बात करने में, that is the time that is very important you contact your upline. वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जब अपने अपलाइन को कॉल करो. So actually it's not that complicated, और इसलिए मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. but we are human. लेकिन हम लोग सब इंसान हैं. We are made by flesh and blood. हम लोग सब We are not robot. हम लोग रॉबर्ट नहीं हैं, हम लोग मशीन नहीं हैं. That's why, you know, my upline says one habit that you need to change to develop is CD listening habit. और इसीलिए हमारे अपलाइन हमको कहते हैं कि एक आदत जो आपको बदलनी होगी वो है सीडी और किताब पढ़ना और सुनना. So if you come out of this convention, one thing that you should change is listening habit, listening to CDs. तो अगर एक चीज अगर आप जो बदलना चाहते हैं अपने आप में इस कन्वेंशन के बाद, वो है सीडी सुनने की आदत. Because I do not know how to become a diamond. क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि डायमंड कैसे जाना I है. only know how to survive, you know, doing one goal after another and just make that goal achieve. मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि एक गोल से दूसरे गोल तक कैसे सरवाइव करना है. And showing 15 plans every month, that is very critical. और 15 प्लान हर महीने दिखाना बहुत ही If you critical है. can show 15 plans a month, अगर आप 15 प्लान महीने में दिखा सकते हैं, you already become a top 80% in all business. तो आप उतना ही करके आप 80% टॉप में आ जाते हैं. So your chance of success already 80%. तो आपका 80% सक्सेस का चांस इस बिजनेस में बढ़ जाता है. And if you can regularly, consistently show 15 plans a month for 3 months in a row, then you get an eagle. और अगर आप लगातार 15 प्लान 3 महीने तक दिखाते हैं तो आपको एक ईगल मिलता है. You immediately go up to the top 5% in this business. तो आप टॉप 5% में पहुंच जाते हो इस बिजनेस के. Your chance of success become 95%. तो आपका सफलता का चांस 95% हो जाता है. Just because you show 15 plans a month, every month. सिर्फ इसलिए कि आप 15 प्लान महीने दिखाने की आदत आप में डाल ली है. And the good thing in this business is a law of averages apply. और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में कि लॉ ऑफ The एवरेजेस अप्लाई number होता है. of big business, the number of big numbers.
लॉ the law of big numbers. बड़ी संख्या का जो नियम है. I recently got a phone call from this telemarketing guy. मुझे एक टेली मार्केटिंग I don't know what's happening in India. Do they call you a lot of मुझे पता times? नहीं हिंदुस्तान में होता है कि नहीं, बहुत लोग आपको कॉल करते हैं अपने Offering you this loan, insurance and आपको कोई everything. लोन या इंश्योरेंस फोन पे ऑफर करते हैं. We get so many calls from them. हमें तो बहुत सारे कॉल आते हैं. Sometimes it becomes so irritating. कभी-कभी तो बहुत गुस्सा भी आता है. Because you are in the middle of something, they call you. आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक एक फोन आ जाता है. So normally whenever they call me, I always ask them to meet me in the business preview. तो मैं जब भी वो कॉल करते तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ बिजनेस प्रीव्यू में. I always tell them, wow, someone like you is so suitable to my business. I'm looking for someone like you, but I cannot have time right now. Why don't we meet on Tuesday night? और हम उनको कहते हैं कि हमें आप जैसे I always do that. मैं आप जैसे इंसान को खोज रहा था, मुझे अभी समय नहीं, हम लोग क्यों नहीं. So a few months ago, there's a guy calling me, and I normally do that. कुछ महीने पहले हमें किसी ने इसी तरह से फोन किया था और मैंने यही काम किया. And then he said to me, "Oh, I know you are Robert Angkasa. I know you are in amway." और उन्होंने कहा कि आप रॉबर्ट अंकासा है, मैं तो आपको जानता हूँ. And then I asked him, oh, well, then if you already know, okay, I cannot offer you amway anymore. तो मैंने उनको कहा कि आप तो जब हमको पहले से जानते थे तो मैं आपको एमवे ऑफर नहीं कर सकता. He said, oh, I used to do in amway, blah, blah, blah. And at that time I still had time, and so I asked him, okay, what do you have to show me? तो मैंने कहा कि अच्छा बताइए क्या आप हमको दिखाना चाहते हैं. So he, on the phone, he read like about 3 minutes his plan. तो फोन पे वो 3 मिनट तक उसने अपना प्लान offering me this insurance. और मुझे एक इंश्योरेंस प्लान दिखाया उसने. And then after that I asked him, और उसके बाद मैंने उससे पूछा how many years you've done this? तो मैंने पूछा कि कितने साल से तुम ये काम कर रहे हो. I only did it for 6 months. तो उसने कहा मैंने तो सिर्फ 6 महीने तक किया है. And how many times a month, how many times a day you have to call people? और मैंने कहा कि कितने बार आप दिन में. He said my boss asked me to make 300 calls every day. तो उसने कहा कि मेरा बॉस तो मुझे 300 कॉल रोज बोलता है करने का. And then out of the 300 calls, how many you able to show the plan, like reading those script? तो मैंने कहा 300 में से कितने लोगों को आप ये प्लान दिखा पाते हो. About 70 to 80 people that I managed to read out the script to them. तो उसने कहा कि मैं 70 से 80 लोगों को ये स्क्रिप्ट पढ़ के बता. And then out of those 70 to 80, how many actually interested? तो 70-80 में से कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं. About 15, he said. तो उसने कहा 15 लोग. Wow, the law of big numbers work. तो मैंने कहा देखो लॉ ऑफ बिग नंबर तो काम करता है. 300 people every day. 300 लोग रोज. 70 will want to listen to the plan. 70 लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे. And 15 will be interested. और 15 लोग आपकी बात से सहमत होंगे. In a day. एक दिन में. When I used to work in the bank, जब मैं बैंक में काम करता था, I'm managing a collection department. मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट मैनेज करता था. On average, each staff have to call about 120 people every day. एवरेज एक स्टाफ को 120 लोगों को कॉल करना होता था. Calling people who have bad debt is harder, right? उन लोगों को कॉल करना जिनका लोन बाकी है. Anyway, I'm not sure whether that guy earns maybe maximum like 12% or 15% in our business. मुझे पता नहीं वो आदमी कितना कमाता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे बिजनेस में 12 से 15% की. But he is willing to do the call every day, 300 people. लेकिन वो उस इनकम के लिए 300 कॉल रोज करने को तैयार है. For us, we only need to show 15 plans a month and still don't do that. और हम तो अपने बिजनेस में सिर्फ 15 प्लान महीने करने की बोलते हैं और उसके बाद भी हमें इसमें हिचकिचाहट होती है. If you show 1,000 plans with the right attitude, counseling upline, you will become a diamond. अगर हम 1000 प्लान दिखाएं राइट एटीट्यूड के साथ और अपलाइन काउंसिल के साथ, तो हम तो डायमंड चले जाएंगे. Why don't you try and prove it? क्यों नहीं करके इसको साबित करते इस चीज को. So that's why so many people have only employee mentality. इसीलिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय मेंटालिटी होती है. They only want to do something if they get paid. उनको लगता है कि वो जब तक उनको पहले से पे नहीं निर्धारित हो तब तक वो काम करने को तैयार नहीं. In this business you invest. इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो. You work, no result. आप काम करते हो, work, no result. कोई रिजल्ट नहीं आता. काम But करते हो, after कोई that नहीं आता. you don't work, the results still keep और coming. उसके बाद आप काम नहीं भी करते हो और रिजल्ट आते रहता है.
I haven't been working in this business for many years. मैं इस बिजनेस में आप बहुत सालों से काम नहीं कर रहा हूँ. After being a crown, मैं क्राउन बनने के बाद I lost my dream. मैंने मेरा सपना खो गया. There are a lot of personal and family challenges in my life. मेरी जिंदगी में बहुत पर्सनल और फैमिली चैलेंजेस थे. So I didn't have a dream. तो मेरा ड्रीम खत्म हो गया था. For many years I came to the meeting like this but didn't show the plan, didn't build a business. मैं मीटिंग में आता था पर प्लान दिखाता नहीं था. But Amway keep paying me not a single cent less. लेकिन एमवे ने कभी भी हमको 1 सेंट लेस भी पेमेंट किया नहीं. Amway paid me for the work that I've been building for many years. तो एमवे ने मुझे पेमेंट करती रह रही है जो मैंने इतने साल से जो काम किया. If I haven't to die today, अगर आज मुझे मरना पड़े 80 to 90% of whatever income from Amway, I'm still getting it and it can be inherited to my children. तो 80% पैसा इनकम अभी भी आते रहेगा हमारे जाने के बाद भी और मेरे बाल बच्चों को इनहेरिट. So you only need to work a certain period of time. तो आपको सिर्फ एक कुछ समय तक के लिए ही कड़ी मेहनत करनी. For me, I built this Amway business working very hard only for the first 2 years. हमने तो इस बिजनेस को बहुत कड़ी मेहनत से सिर्फ पहले 2 साल में ही बिल्ड किया है. In fact, the first 1 year, it has been so many times I wanted to quit because I had no result. इनफैक्ट पहले साल तो बहुत बार हम इसको इस तरह से काम करते हमें क्विट करने का भी मन था इसमें. But luckily I didn't quit. लेकिन लक से हमने इसको क्विट नहीं किया. Right now, out of the crown business we have, at least 80% of the whole organization we have, it's originated from the first I built this business. मेरा 80% बिजनेस क्राउन का जो आज है वो पहले 2 साल की मेहनत का ही नतीजा है. So don't quit. तो मैं आपको कहूंगा छोड़ना मत कभी भी. And your goal as a network builder, after you show, plans every month, then you need to think how many people doing also 15 plans a month in your group. तो आपका ये गोल होना चाहिए कि जब 15 प्लान दिखा रहे हैं तो आपके ग्रुप में कितने लोग ये 15 प्लान दिखा रहे हैं. So your goal is to have 10 of the people like you in 3 different legs. Check with your upline, and you will become 21%, and you'll be earning 50,000 rupees every month for the rest of your life. तीन अलग अलग में कम से कम 10 लोग होने चाहिए जो 15 प्लान दिखा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी इनकम आने लगेगी. आपने अपलाइन से प्लीज चेक करें इसके बारे में. So it's so simple, this business. You try to do this business for the next 12 months. Be 15 planners at least every month and creating 10 people in your organization showing 15 plans. Then you'll be earning 50,000 rupees every month. आने वाले 12 महीने में एक निर्णय करें कि आप 15 प्लान दिखाएंगे और 10 लोगों को खोजेंगे जो आपकी तरह 15 प्लान दिखा रहे हैं तो 50,000 रुपया महीने आप अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं. And the second thing you need to do if you are a network builder, you need to be good at doing a follow-up. और दूसरी चीज जो आपको अच्छी से सीखनी पड़ेगी नेटवर्क बिल्ड करने के लिए वो है फॉलो अप करना. Remember, you are a network builder. As a network builder, you only 50% successful after they join. आप एक नेटवर्क बिल्डर हैं और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ज्वाइन करने के बाद भी 50% ही सक्सेस है. Because if they join doing nothing, it's useless. क्योंकि अगर वो ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं करते हैं तो भी समय बर्बाद हुआ. So what you need is you need to get their list. तो आपको उनकी लिस्ट मिलनी चाहिए. I will tell later in the leaders meeting how to go deep. मैं लीडर्स मीट में सिखाऊंगा कि कैसे बिजनेस में नीचे डीप. But for now you just think that if you have someone join under your group, their lifespan is only 2 weeks. तो अगर आपके बिजनेस में कोई ज्वाइन करता है तो आप ये याद रखना कि उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 2 हफ्ते का है. Within 2 weeks after they join, you have to think hard how to get their list and how to make them use the products. 2 हफ्ते के अंदर में उनकी लिस्ट आपको लेनी है और उन्हें प्रोडक्ट कैसे यूज करना उसमें डालना है. So many people just want to show the plan to sponsor someone. बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं सिर्फ स्पॉन्सर करने के लिए. No, you actually sponsors. You actually show the plan. The goal is not sponsoring someone. आप जब किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ इसको स्पॉन्सर करना नहीं है. Your goal of showing the plan is actually so that you can do a follow up. आपका गोल ये है स्पॉन्सरिंग करने के लिए कि आप स्पॉन्सर कर सके ताकि आप उसका फॉलो अप कर सके. So that you can show the plan again to their list. ताकि आप इस प्लान को उनकी लिस्ट के लोगों को दिखा सकें.
So as far as I'm concerned, I don't care whether they join or not. तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई चिंता नहीं होती वो ज्वाइन After करेगा। showing the plan to someone, प्लान दिखाने के बाद किसी को, even though if they don't join, अगर वो ज्वाइन नहीं भी करते हैं, as long as I can get the list, जब तक अगर मुझे उनकी लिस्ट मिल जाती है, I'm happy. तो मैं खुश रहता हूँ। Because if he give me the list, अगर वो अपनी लिस्ट मुझे दे देता है, and then I show the plan to his friend, और अगर मैं उनके दोस्तों को प्लान दिखाता हूँ, and then if his friend join, और अगर उसका दोस्त ज्वाइन कर लेता है, I'm sure he will want to तो join. मुझे मालूम है कि वो भी ज्वाइन करेगा। So that's what happen if you are a network builder. और यही होता है जब आप नेटवर्क बिल्डर होते हो। Don't think that your personals is going to be a is going to be a platinum. ये मत सोचना कि आपके पर्सनल, जिसको आपने पर्सनली स्पॉन्सर किया है, वो व्यक्ति प्लैटिनम जाने वाला है। The list of your personals that will become platinum. आपके जो पर्सनल के जो लिस्ट के लोग हैं, उसमें से कोई प्लैटिनम जाएगा। So I know this is quite a long subject and heavy subject for new people. मुझे मालूम है नए लोगों के लिए ये थोड़ा सब्जेक्ट हैवी हो सकता है, थोड़ा भारी हो सकता है। But the most important thing, like 80% of our activities in this network builder is actually on follow-up, not on showing the plan. तो 80% जो हमारा समय बीतता है इस बिजनेस में, वो प्लान दिखाने में नहीं निकलता है, बल्कि लोगों का फॉलोअप करने पे निकलता है। Everybody has diamond in their list. हर लोगों के लिस्ट में डायमंड्स हैं। I have a diamond who actually all 8 people above them are inactive. हमारे एक डायमंड है नीचे में, जिसके ऊपर में सारे 8 लोग इनएक्टिव हैं। But I wouldn't have found the diamond 8 depth if I didn't go through the list everybody. लेकिन उन 8 लोगों के नीचे मुझे वो डायमंड व्यक्ति नहीं मिलता अगर मैं उन सारे लोगों की लिस्ट से आगे नीचे नहीं बढ़ता। And imagine there are so many people in India. सोचिए इंडिया में कितने सारे लोग हैं। You will be able to find so many diamonds. आप कितने सारे डायमंड्स खोज सकते हो अपने नीचे। But the diamonds you found is maybe it's not from your personals. लेकिन वो जो डायमंड्स आपको मिलेंगे वो आपके अपने व्यक्तिगत दोस्तों में से नहीं होंगे। Okay, so think ahead as a network builder. तो आगे सोचिए, दूर का देखिए नेटवर्क बिल्डर। But of course, when you trying to work as a network builder, you will be frustrated. लेकिन जब आप नेटवर्क बिल्डर की तरह काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा। You will find a lot of negative people. आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिलेंगे। And it seems there is no result. और ऐसा लगेगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। But be careful in what you cannot see. पर केयरफुल रहिए उस चीज में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। Something big in things that you cannot see. बहुत सारा कुछ अच्छा हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उस वक्त। You cannot see electricity. आप बिजली नहीं देख सकते। But try to put your fingers in the plug. लेकिन उस प्लग के अंदर जरा उंगली घुसा के देखिए। You cannot see an earthquake. आप अर्थक्वेक देख नहीं सकते। But imagine what earthquake can do. लेकिन सोचिए अर्थक्वेक से क्या हो सकता है। You cannot see God. आप भगवान को देख नहीं सकते। But how mighty God is. लेकिन कितना पावरफुल है। So be careful what you cannot see. तो जो चीज नहीं दिखता है उससे बहुत सावधान रहिए। It's big. वो बहुत बड़ा हो सकता है। Maybe you cannot see the growth of your business. हो सकता है आप अपने बिजनेस का अभी जो दिख नहीं रहा आपको। Not yet. अभी भी दिख नहीं रहा आपको। Because you are meant to grow inside first. क्योंकि पहले आपको अंदर देखना है। That is something you cannot see. जो आपको दिखाई नहीं देता। How you grow yourself to become a better person. आप कैसे अंदर से ग्रो कर रहे हो एक अच्छे इंसान बनने के लिए। Just like building a high skyscraper, you cannot see when people are building the foundation for many months. उसी तरह से जैसे कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सालों तक उसके फाउंडेशन। But after that, it just goes up. और जब फाउंडेशन बनता है तो बिल्डिंग Just like Chinese bamboo, for many years you couldn't see it. उसी तरह से जैसे For चाइनीज many months. बहुत महीनों तक वो लगता कुछ नहीं उग रहा है। But after that, boom. और फिर उसके बाद बहुत तेजी से वो बढ़ता है। So the same thing in this business. You don't judge this business too early. और इसी तरह से इस बिजनेस में भी होता है। From the CDs, the books, the meeting, the association, you are trying to build yourself to be a better person. मीटिंग्स, बुक्स और फंक्शंस के एसोसिएशन से आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। And so many people in Indonesia already prove that by coming to the meetings of Network 21, by reading the books, listening to CD, they can succeed in anything they want to do. और बहुत सारे लोग हैं इंडोनेशिया में जो ये विश्वास करते हैं कि इस तरह की मीटिंग में आके किताब और सेमिनार और सीडी पढ़ के वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। But it's so a shame. It's so pitiful that they do other
business using Network 21 knowledge. लेकिन कई बार वो नेटवर्क 21 का नॉलेज अप्लाई करके कहीं और काम करने की कोशिश करते They are so thankful to us. हैं। वो कई बार हमें However, if they use the knowledge, the growth in themselves, building this amway business, boy, they will be so big and no other business will be able to. लेकिन उसी नॉलेज match और it. विश्वास के साथ अगर आप वो इस बिजनेस में काम करते तो कितना ग्रो कर सकते थे। So you need to do a proper startup. तो आपके लिए एक प्रॉपर स्टार्टअप करना बहुत जरूरी है। A lot of people join this business do not get a proper startup. बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उनके साथ प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हुआ होता है। And initially, the right people normally is not. It doesn't look good in the beginning. सही आदमी को शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसमें। Just remember my story. I wasn't a good distributor in the beginning. मेरा ही मिसाल ले लीजिए, मैं शुरू में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर। There are so many people out there when we try to do a follow-up and a start-up, they are like so arrogant. We feel like strangling their neck. बहुत सारे लोग हैं शुरुआत में वो इतने एरोगेंट होते हैं कि हमें मन करता है उनकी गर्दन मरोड़ दें। That's why we need to read book. इसीलिए To ourselves to keep, being able to communicate with them, use our people skill. और इसीलिए हमें बहुत सारी किताब और पीपल स्किल में अच्छा होना पड़ता है ताकि हम उन लोगों को हैंडल कर सकें। Some people do not grow this business because they keep just sponsoring or being with people who can respect them. बहुत सारे लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो उनको बस रेस्पेक्ट। They only sponsoring peer and below. वो ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं जो पीयर। They only sponsoring people who they do it. Other people do it. सीईओ को जो है छोटे मोटे काम ऑफिस के नहीं करने पड़ते हैं, कॉफी बनाना या फोटो कॉपी करना। But your emeralds and diamonds here, they want to move up another level. They still have to show the plan, being rejected, doing follow-up, going to travel all around. लेकिन आपके एमरेल्ड्स को अगर ऊपर जाना है तो उनको वो सब छोटे मोटे काम प्लान दिखाना, रिजेक्शन उनको वो सब करना पड़ेगा। That's why you cannot be. That's why you always humble. That's why you can see all the diamonds in Network 21 who are active. They just being humble because they still do all those works. इसीलिए आप देखेंगे कि नेटवर्क 21 के जो डायमंड्स हैं हमेशा बहुत हम्बल होते हैं जो ग्रो कर रहे हैं। So the bottom line is you need people skill if you want to build network business. So bottom line ये है कि अगर आप एक नेटवर्क बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप में पीपल स्किल होना पड़ेगा। All those activity look to you what you want to do to increase your list, you have to do prospecting, you need people skill. आपको अगर एक्टिवली लूप करने के लिए एक बड़ी लिस्ट चाहिए तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा जिसमें पीपल स्किल चाहिए। When you invite people, you need people skill. जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं उस इनविटेशन को अच्छा करने के लिए पीपल When you show the plan, no matter how good your plan is, आप जब प्लान दिखाते हैं चाहे वो कितना भी अच्छा प्लान हो, no matter how good your charisma or whatever, but if they don't like you, they will not join आपका you. प्लान कितना भी अच्छा हो, कितना भी एक्साइटेड हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको लाइक नहीं करता तो ज्वाइन नहीं करेगा। During the follow-up, फॉलोअप के दौरान you need people skill. आपको पीपल स्किल की सख्त जरूरत है। How can you expect someone to give you the list, their friends, if they don't like you in the first place? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अपने दोस्तों का लिस्ट आपको दे देगा अगर वो आपको लाइक नहीं करता है? Just take it to yourself. If you hate that person, अगर आप किसी को नफरत करते हो, do you want to give your friends name and phone number to them? तो क्या आप चाहोगे कि वो आपके दोस्तों से मिले? Of course not. बिल्कुल नहीं। So it's our job तो ये हमारा काम है to be likable. कि हम ऐसे व्यक्ति, हम एक लाइकेबल इंसान बने। Before they like us, इससे पहले कि वो हमें they have to know us. वो हम उन्हें अच्छा लगे, उन्हें हमें So जानना this is पड़ेगा। the principle of know, like, trust. और इसीलिए नो लाइक ट्रस्ट का एक प्रिंसिपल है। The ultimate goal is they need to trust you. आखिरकार हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रस्ट करें। But before they trust you, they need to like you. विश्वास के पहले वो हमें उन्हें अच्छा लगना पड़ेगा। So that's why we need to listen more. और इसीलिए हमें ज्यादा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। Use our ears and mouth in the same proportion. हमें अपने कान और मुंह का सही प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। So we listen more than we speak. हम ज्यादा सुनेंगे और बोलेंगे कम। Especially during follow-ups. खास तौर से जब हम फॉलो अप कर रहे हो।
And so many people, they think they work so hard, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं but they have no result लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, because they just don't like you. क्योंकि वो लोग आपको लाइक नहीं करते, They don't like the appearance. वो आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता, They don't like the way we talk. आपके बोलने का बात करने का तरीका उन्हें अच्छा नहीं लगता. Maybe you need to, sorry if getting personal, you need for more hygiene. आपको थोड़ा सा हो सकता है हाइजीन की जरूरत हो, साफ सुथरा That is important. वो भी इम्पोर्टेंट है. Like if you talk in front of people, मान लीजिए आप लोगों से बात कर रहे हैं like they need to be comfortable in तो वो it with you. आपके एसोसिएशन में अच्छा लगना चाहिए. Remember, people join you. They don't join amway. They don't join Network 21. लोग आपको ज्वाइन करते हैं, एमवे को या नेटवर्क 21 को ज्वाइन नहीं करते हैं. And it is our responsibility to keep growing personally. ये हमारा दायित्व है कि हम अपने पर्सनल ग्रोथ का रिस्पांसिबिलिटी लें. At school, we are forced by our parents to study. स्कूल में हमें दबाव रहता है माता पिता का पढ़ने के लिए. But when you are at university, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में होते हो, especially when you are taking specialists, जब आप स्पेशलिस्ट कोर्सेज लेते हो, nobody force you to do it. कोई भी आपको फोर्स नहीं करता So पढ़ने it's के लिए. our responsibility to study. ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप पढ़ें. And this is University of Life. और ये यूनिवर्सिटी है लाइफ का. We have to be responsible in ourselves to keep improving ourselves, studying, reading books, listen CD, and come to the meetings all the time. अपने ग्रोथ की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, खुद ही हमें अपने से किताब पढ़ना और सेमिनार जाना और सीडी का रिस्पांसिबिलिटी A लेना. lot of people is asking about the secret how to build this बहुत सारे business. लोग पूछते रहते हैं सीक्रेट क्या है इस बिजनेस का. So the secret is yourself. तो सीक्रेट है आप. Who have watched Kung Fu Panda? कितने लोगों ने कुंग फू पांडा देखा? It's a very great movie. बहुत अच्छी मूवी है ये. The secret is yourself. सीक्रेट है योरसेल्फ. And the third thing that you need to do if you want to build a good big network, और अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, you need to use the BBS and the convention like आपको this. कन्वेंशन, इस तरह का कन्वेंशन और बीबीएस यूज करना सीखना होगा. Because if you show 15 plan a month, अगर आप 15 प्लान दिखाते हैं महीने में, I'm sure if you do it right, you will be able to bring at least 5 personals to the BBS. अगर आप सही तरह से करेंगे तो कम से कम 5 लोगों को, 5 पर्सनल लोगों को आप बीबीएस ला. So if you are able to bring 5 new personals to the BBS, अगर 5 नए लोगों को बीबीएस में लाने में सफल होते हैं, I'm sure you will be able to find at least one who will want to show 15 plans. तो आपको कम से कम एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कि 15 प्लान दिखाना चाहेगा. So that is the cycle in a month. और यही एक महीने का साइकिल है. Showing 15 plans, 15 प्लान दिखाना, getting them to the BBS, उनको बीबीएस लाने में मदद करना, and one of them will show 15 plans in your group. और उसमें से एक आदमी को 15 प्लान. So after a few months, then you will have 2, you will have 4, you will have 8, then your business is growing. इसी तरह से महीने में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लोग बढ़ेंगे. You have to make use of the BBS and this convention. आपको बीबीएस और कन्वेंशन का सही इस्तेमाल करना होगा. I know some of you come very far from Delhi to be able to come to this convention. मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग दिल्ली से बहुत दूर से आए हैं इस कन्वेंशन में आने के लिए. I want to tell you a story about this one gentleman who live in Papua. मैं एक जेंटलमैन की कहानी बताना चाहता हूँ जो पपुआ में रहते थे. So from Jakarta to Papua, as I told you, it's very far. जकार्ता से पंपुआ जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबा है दूरी. I think the flight would be just like from Delhi to Jakarta. So I think about 5 to 6 hours. कम से कम 5-6 घंटे का तो फ्लाइट का डिस्टेंस है. But it takes longer because they have to stop over. लेकिन बीच में बहुत सारे And by boat 7 days. और अगर नाव से आए तो 7 दिन लगता है. So there is a gentleman here who worked very hard. एक जेंटलमैन थे जिन्होंने बहुत काम कर रहे थे. He built big network. बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया. And then his boss didn't like him. लेकिन उनके His boss didn't like him doing amway. और उनके बॉस को एमवे करता अच्छा नहीं लगा उनको. So his boss moved him out of town, still in Papua, out of town. तो उनके बॉस ने उनको उस शहर से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया. So all his business that he has built disappeared. तो उस शहर में उन्होंने जो भी बिजनेस बिल्ड किया So he rebuilt his business in the other new town. तो उन्होंने अपने नए शहर में नया बिजनेस बिल्ड कर दिया. And his boss still didn't like it. He moved
to another उनके town. बॉस को वो चीज अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको फिर दूसरे शहर में So ट्रांसफर the business that he built disappeared तो again. वहां भी उसका सारा बिजनेस खत्म हो गया So he rebuilt again to the new town. तो उन्होंने फिर से नए शहर में फिर से बिजनेस बिल्ड किया After a while, he got tired. और ऐसा करते करते कुछ दिन के बाद वो थक गए He thought to himself, "Oh, I don't think I will be able to do this और business." उनको लगा कि अब ये बिजनेस को लगता नहीं He कि wanted to give up. वो छोड़ना चाहते थे He been bringing people a lot to Jakarta, from Papua. लेकिन वो पपुआ से जकार्ता में बहुत लोगों को मीटिंग्स में लाते थे So the time when he wanted to give up, और जिस समय वो ये बिजनेस छोड़ना चाहते थे at midnight, 12 बजे रात को he got a phone call उसे एक from call his आया। upline in Jakarta. उनके अपलाइन से जकार्ता में फोन आया That phone call saved him उस फोन कॉल ने उसको बचा लिया इस because his upline still say he still believe in him and so on. उनके अपलाइन ने कहा कि मैं आप पर बिलीव करता हूँ He विश्वास was on the brink of giving up, वो जस्ट छोड़ने ही वाला था बिजनेस and then he rebuilt again. तो उसने फिर से दोबारा एक और ट्राई किया And just on the recent weekend seminar, he brought 400 people from Papua to और here. अभी पिछले बार जो एक कन्वेंशन होता है वो 400 लोगों को लेके आया So story after story, इस तरह से अनेक कहानियां हैं when you keep believing in your upline, कि जब आप अपने अपलाइन पे बिलीव करते keep रहते doing हो this और इस business, business को करते keep रहते using हो, the system, सिस्टम को यूज करते रहते हैं you will succeed. तो आप सक्सीड जरूर करेंगे And the fourth things is, if you want to build a big business, you need to use tools. और अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको टूल्स का इस्तेमाल करना होगा The most ineffective tools is you. इस बिजनेस में सबसे इनइफेक्टिव टूल है वो आप हैं The secret of success is doing less talking and less convincingly. ये सीक्रेट है कि आप कम बात करें और कम कन्विंसिंगली बात करें When people ask me why I could build this business जब लोग big, मुझसे पूछते हैं कि आप ये बिजनेस कैसे बिल्ड कर पाए इतना बड़ा I said to them, because I have a lot of people better than me. तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे बिजनेस में मुझसे भी अच्छे कई लोग हैं I found many good leaders in my मैंने organization. अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे लीडर्स को हमने खोजा And it's impossible to find better people than you unless you use tools. और आप अपने से अच्छे लोगों को नहीं ला सकते अगर आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे In this room, इस रूम में only 25% of you who can relate to me. सिर्फ 25% लोग हैं जो मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ And don't expect 100% of all people will relate to you. आप मत और इसी तरह से आप भी मत सोचिए कि सारे लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे So when you're doing this business, जब आप ये business in करते हैं, general, only 25% of what you see, of what you, of who you show the plan, will relate to you. औसत 25% लोग ही आपकी बात समझेंगे या आपसे रिलेट करेंगे जब आप ये काम So the majority will not relate to you and me. ज्यादातर लोग आपसे या हमसे रिलेट नहीं करेंगे कभी भी Luckily, we have CDs, लेकिन हमारे पास भागवत सीडीज हैं speakers of which have different background, different personality. ऐसे स्पीकर्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं अलग अलग पर्सनैलिटी के We हैं don't have to be good in ourselves. हमें अपने में अच्छा होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है We don't have to be successful first. हमें पहले सक्सेसफुल बहुत होने We की just जरूरत learn CDs of successful people. हमें तो सक्सेसफुल लोगों की सीडी लैंड करनी आनी चाहिए There are so many people who cannot build this business because they are so proud of themselves and they want to manage their group and they think it's them who is good. बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में जो कि बहुत अच्छा बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाते हैं कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं You have to humble yourself and be ready and be willing to have downlines who are much better than you. आपको विनम्र होना पड़ेगा और अपने डाउनलाइंस को मौका देना पड़ेगा जो कि आपसे अच्छा काम कर सकते हैं If you are a diamond who have a lot of double diamond crowns in your organization, wow, that's the ideal thing. अगर आप एक डायमंड है और आपके नीचे बहुत सारे डायमंड्स और डबल डायमंड्स हैं इससे बढ़िया और क्या हो सकता है That's why I can travel here in India. मैं इसीलिए तो इंडिया आ पाया हूँ That's why in April we can go to Paris. और इसीलिए हम अप्रैल में पेरिस जा सकते हैं That's why in May we can go to China. और इसलिए मई में मैं चाइना जा सकता And हूँ in June we are going to Romania and Czech Republic. और जून में रोमानिया और चेक रिपब्लिक जा रहा And हूँ for the last few months we travel a lot और also. पिछले कई महीनों से भी हम लोग बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं That's why we can leave Indonesia and do not worry that our business will fall apart. और इसीलिए मैं इंडोनेशिया से निकल सकता हूँ बिना चिंता किए हुए कि हमारा बिजनेस गिर जाएगा Because we have the tools, we have CDs, क्योंकि people हमारे पास- listening to CD while I'm talking to you क्योंकि right आज हम जो now. आपसे बात कर रहे हैं ये सीरीज में हमारे लोगों को सुनने को मौका मिलता है हमेशा That's why you need to be
excited and passionate on getting people on CEP. और इसीलिए आपको एक्साइटेड होना है और पैशनेट होना है लोगों को सीपी प्रोग्राम में रजिस्टर कराने के लिए। If you have 40 people who are on CEP, you will be 21% for the rest of your life. अगर 40 लोग आपके कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में हैं तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर होंगे पूरी जिंदगी। So one CEP, one people registering in CEP, it means so much. एक आदमी सीपी में रजिस्टर करना कितने मायने रखता है। And I've seen so many people grow in their life because of CEP of Network 21. बहुत सारे लोगों को लाइफ में ग्रो करते हुए देखा है नेटवर्क 21 के सीढ़ियों के कारण। There is a recent story about this one of our downline. He used to be working in the hotel as a porter. एक मिसाल है रिसेंट हमारे डाउनलाइन है जो कि पहले पोर्टर थे सामान उठाने का काम करते थे। He got introduced with the business. वो इस बिजनेस में आए। And Network 21 often do functions in that hotel, a 5-star hotel. नेटवर्क 21 के फंक्शंस होते उस 5 स्टार होटल में वो अटेंड करते थे। So he become a member here on CEP and listen to a lot of CDs. वो मेंबर बने और बहुत सारे सीपी सुनते थे। And then when he is asked what his dream is, और जब उनसे पूछा गया कि उनका ड्रीम क्या है, he said he wants to marry. His dream is he wants to marry a guest of his hotel from outside the country. तो उनका ड्रीम था कि एक उसके होटल में एक गेस्ट आई थी दूसरे विदेशी, उनसे वो शादी करना चाहते थे। So when he told his dream to his colleague porters, तो उन्होंने जब अपने सहपाठी कुलियों से ये बात कही, all his friends were laughing at him. तो सारे उनके दोस्त उस पे हंस पड़े। What, you are a porter, your dream want to marry a lady from overseas who are guests in this hotel? You must be out of your mind. लगे आप कैसा सपना देख रहे हैं पागलों जैसा, आप एक कुली हो और एक विदेशी लड़की से शादी करने का सपना देख रहे हैं। But he doesn't care. लेकिन उन्हें परवाह नहीं की। He keep building the business, he keep listening to CDs. वो सीडी सुनते रहे, बिजनेस को बिल्ड करते रहे। But he's still working as a porter in that hotel. लेकिन ये सब करते हुए भी वो कुली का काम करते रहे होटल में। And then one day a lady from Japan came to visit the hotel. और एक दिन एक लेडी आई जापान से उस होटल में। So she fell in love in him. वो उनसे प्यार हो गया। But he didn't believe it. लेकिन उसको विश्वास He नहीं didn't हुआ। trust her. So then she left to the country, to Japan. वो फिर वापस जापान चली गई। The second time she came again. वो दोबारा फिर आई। And then they built more relationship. और उनका रिलेशनशिप और गहरा हुआ। The lady want to marry him. लेडी उनसे शादी करना चाहती थी। But he still didn't believe it. और फिर भी वो उनको विश्वास So नहीं she went back and the third time she came. तो वो फिर चली गई और तीसरी बार दोबारा आई। And then now he believed it and they got married in 1997, और long time ago. 1997 में उन्होंने शादी कर ली। They moved to Kyoto in Japan. और वो जापान शिफ्ट कर गया क्योतो में। And then he's a dreamer because of the listening to CDs. और वो सीडी सुनने के कारण एक अच्छे ड्रीमर बन गए हैं। And then his dream was he wants to be a successful, the soya cake, like made of soya. We call it tofu. What is it? Tofu. Yeah, you know tofu. Okay. His dream is he wants to make tofu in Japan. तो उनका एक ड्रीम था कि वो टोफू का एक बहुत बड़ा कारखाना बनाए। So he tried to make it several times and he failed. और बहुत बार वो बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। And then he went back to Indonesia, और फिर वापस to his city, and he learned how to make tofu from 60 different tofu makers. तो वो 60 अलग-अलग टोफू मेकर से टोफू बनाने की कला। And then he went back to Japan. He tried to make his tofu. वो वापस जापान गए। So he finally able to make the tofu. और फिर वो बनाने शुरू कर And he offered to many restaurants in Japan. और बहुत सारे रेस्टोरेंट में उन्होंने टोफू ऑफर A lot of people rejected him. बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनका टोफू। And he kept doing it. फिर वो करते रहे। He kept listening. The CDs was sent to Japan. He kept listening the CDs. लेकिन वो सीडीज निरंतर सुनते रहे। And then he wanted to build a small factory outside his house. और वो अपने घर के बाहर में एक छोटी सी कारखाना So while he was building the factory, बनाया और जब तक वो फैक्ट्री बना रहे थे, it was winter, -10 degrees. He's still outside building it. -10 डिग्री सेंटीग्रेड थी, फिर वो काम कर रहे थे। And people keep saying that he's crazy doing it. और लोग उस पे हंसते थे। And he kept saying to people that I built this for my dream. लेकिन वो लोगों को कहता था कि मेरा सपना मैं एक दिन से पूरा करूंगा। And one day, और एक दिन actually the one that
came across to see him and said that he's crazy is a reporter. और जो आदमी उसको बार बार कहता था कि आप क्रेजी हो, एक्चुअली रिपोर्टर So था। this reporter was curious and asking him about, anything about him, and then he was posted in the newspaper in Japan. और इस खबर को उस न्यूज़पेपर ने जापान में प्रिंट किया A crazy Indonesian wants to build a tofu factory. कि एक पागल इंडोनेशिया यहाँ पे जापान में एक टोफू फैक्ट्री To लगाने cut the long story short, after being famous in the newspaper, he comes back to all the restaurants who rejected him. Then his tofu become more and more famous. लेकिन उस अखबार में खबर छपने के बाद वो जब रेस्टोरेंट में जिन लोगों ने उसको ना बोला था वो फेमस हो गया। He's now selling 1 ton of tofu every 4 days. अब वो बहुत ज्यादा टोफू बेचते हैं। Even our airlines Garuda is ordering his tofu for the flight Tokyo to Jakarta. जकार्ता की फ्लाइट में भी उनका For ही his टोफू यूज in-flight होता है। service, and he's been invited to Indonesia और वो इंडोनेशिया में as a उनको businessman, उसको एक बिजनेसमैन की तरह न्योता मिल रहा है and he was interviewed in the newspaper, in the magazine, in the TV shows, और टीवी शोज में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं and without hesitation he told his story, and the reason why he could be here because of Network 21 और उन्होंने CDs. बिना That's what he hesitation said. के बताया कि रीजन है जो कि मैं आज सफल हूँ वो है नेटवर्क 21 के सीडीज। So if a porter can become a very successful businessman because of Network 21 CDs, surely you can build diamond because of Network 21 CDs. एक कुल्ली अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है नेटवर्क की सीडी से तो जाहिर है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। But now he said to me that he's enough of it, because having as a self-employed, there are so many hustles, and now he wants to build the business in Japan, he said. अब वो जापान में amway बिल्ड करना business. चाहते हैं क्योंकि अब वो अपना जो काम कर रहे थे टूफू का उसमें एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड उनके बहुत सारी परेशानियों से वो मुक्त होना चाहते हैं। And the last thing I mentioned to you is that if you want to build huge business, you have to be good in building that. और मैंने कहा था कि अगर इस बिजनेस में आगे बड़ा करना है तो आपको डेप्थ बिल्ड करने आना होगा। Unfortunately, I don't have time to talk to you about this topic. लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इस टॉपिक में बात करने के लिए। But I'm going to share with your leaders, and please, if you want to build a big business, consult with your upline how to build them. और इसकी चर्चा हम आपके लीडर से दूसरे मीटिंग में करेंगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने अपलाइन से काउंसिल करें इस विषय पे। One I want to tell you is that you have such a great potential in this business, in this market. मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत पोटेंशियल है आपके लिए इस मार्केट में आपके लिए। This business is huge because of big population. ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा The reason why amway sales getting bigger and bigger every year, because of the world population is become bigger. एमवे का जो टर्नओवर है वो हर साल बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया की जनसंख्या भी बढ़ रही है। In 1930, the world population is only 2 billion. 1930 में 2 बिलियन ही था पॉपुलेशन वर्ल्ड। In 1980, double to become 4 billion. 1980 में वो 4 बिलियन हो गया। And in year 2000, become 6 billion. और 2000 में 6 बिलियन हो गया। Now it's more than 7 billion. और world आज वो population. 7 बिलियन से भी ज्यादा है। And 1 billion is in India. और 1 मिलियन उसमें तो हिंदुस्तान में ही है। And how many teeth are there in India? और कितने सारे Teeth. और दांत कितने हैं हमारे? So many billions of teeth in India, right? सोचिए कितने बिलियन, 100 बिलियन दांत हैं हिंदुस्तान में। How many of you brush your teeth this morning? आप में से कितने लोगों ने सुबेरे अपना टीथ ब्रश किया? Oh, some people didn't raise their hands. अच्छा, Don't talk to them. How many plan to brush their teeth tonight? आप में से कितने लोग हैं जो रात में अपना दांत मांजने की सोच रहे हैं? The same people didn't raise their hands. वही लोग। Amazing. Okay, what I'm saying is we are so lucky that amway sell toothpaste, one of the हम products. ये कहना चाहते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि एमवे टूथपेस्ट बेचता है। How many of you can name 20 toothpaste brand in India? आप में से कितने लोग हैं Fast. जो 20 ब्रांड्स के नाम जल्दी से बता सकते हैं इंडिया में? Not many.
बहुत लोग नहीं बता सकते। So can you imagine out of this 1 billion population who have teeth and brush their teeth with toothpaste, and we are only competing with a few toothpaste brands. तो सोचिए आप, इतने हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं जो दांत साफ करते हैं रोज टूथपेस्ट से, और उनको 2 ही 3 कंपटीशन के साथ हमें compete करना है। Even if we only sell toothpaste, अगर हम सिर्फ टूथपेस्ट ही बेचें, all of you in this room can be a diamond. आप सिर्फ टूथपेस्ट से ही आप सब डायमंड हो सकते हैं इस रूम में। This is how big this business is. इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। So it's so big potential, and a lot of young people in our countries, your country and my और country. हमारे और आपके देश में बहुत सारे यंग लोग हैं। In Indonesia, there are 130 million young people 29 years and below in Indonesia. इंडोनेशिया में 130 मिलियन 29 साल से कम लोग हैं। I'm sure in India also, मेरे हिसाब से a lot of young people. हिंदुस्तान में भी आंकड़े कुछ ऐसे ही होंगे। In European countries, in some other countries, there are aging populations. यूरोपियन कंट्री में एजिंग लोगों की संख्या ज्यादा है, So there's so much potential और इसलिए यहाँ बहुत पोटेंशियल in you and me in this market. हमारे और आपके लिए इस मार्केट में। But potential means nothing if you don't do something. लेकिन पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। So you have a lot of lists, तो आपके पास बहुत बड़ी you लिस्ट, have a lot of friends, आपके बहुत सारे दोस्त, but it means nothing if you don't show the plan to them. लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है अगर आप उनको प्लान न दिखाएं। So potential only become an energy if you release it. पोटेंशियल एनर्जी तभी बनती है जब उसको रिलीज करते हैं। So do your work. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ काम करिए। So you have to start with your list. तो आपको अपनी लिस्ट से शुरुआत करनी होगी। And there are so many things I want to share with you. मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। And I also find something that only 1% that of this work that you know. ये भी मालूम है कि 1% ही चीज है जो आप जानते हैं। And 10%, like 1% of you know is like, I know my name is Robert. 1% ही जानते हैं आप। I know the capital of India is New Delhi. आप जानते हैं कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। But it's only 1% that we know. सिर्फ 1% ही ज्ञान है जो हमें मालूम है। The other 10% जो we know that we don't know. 10% हमें मालूम है कि हमें नहीं मालूम है। I know that I don't know how to do brain surgery. मुझे मालूम है कि मुझे ब्रेन सर्जरी करना नहीं I है। know that I don't know how to be a pilot. मुझे You know, मालूम- to fly the aeroplane. मुझे मालूम है कि मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता है। But there's only 10%. लेकिन वो सिर्फ 10% है। And 89% of the whole world, we don't know what we don't know. और 89% जो है वो तो हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता। I recently got a letter, an email, blog from Jim Donnan. मुझे एक ईमेल मिला था अभी कुछ दिन पहले जिम डॉन से। That shows that how huge, this whole universe. कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। I didn't know that I didn't know. मुझे पता नहीं था कि मुझे ये पता नहीं है। This is the facts. The light travels at the speed of 186,000 miles per second. कि जो लाइट है वो 186 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से चलता है। It takes 1.5 seconds to travel from Earth to Moon. अर्थ से मून तक जाने में उसे 125 सेकंड्स लगता है। So by the light, okay, the light travels. It takes 1.5 seconds from the Moon to the Earth. Is it hard to translate? Sorry. चांद से अर्थ तक 1.5 सेकंड्स लगता है लाइट को ट्रैवल करने में। Okay, and it takes 8 minutes from the sun to Earth. और 8 मिनट लगता है सूरज से पृथ्वी तक आने में। Because the distance between Earth and sun is 93 million miles. जो कि 93 मिलियन माइल डिस्टेंस है अर्थ का सन से। Okay, give you some perspective, right? इससे आपको एक पर्सपेक्टिव। Now, it takes 6 years to get to the nearest star. लेकिन जो हमसे सबसे नियरेस्ट स्टार है वहां From one star to the nearest star, it takes 6 years of light travels. लाइट को 6 साल लगते हैं आने में। And that is still in our own galaxy. और ये हमारे अपने गैलेक्सी में जो स्टार्स की बात है। And our galaxy have more than 200 billion stars. और हमारे गैलेक्सी में 200 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं। And there are 500 billion galaxies. और 500 गैलेक्सीज हैं पूरे Each of which have hundreds of billions of stars. और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं।
So for light to travel from the farthest edge of the known universe, तो लाइट को जो सबसे दूसरा यूनिवर्स का सिरा है वहां से आने के लिए it would take 12 billion years 12 बिलियन ईयर्स लगेगा उस लाइट को हमारे तक पहुंचने at 186 miles per second. अगर वो 186 माइल्स पर सेकंड ट्रैवल करेगा तो So much that we see in the sky when we look at night, all the thousands of stars, हम जब रात में इतने सारे स्टार्स देखते हैं आसमान में it actually from multiple galaxies, जो मल्टीपल गैलेक्सीज हैं but it's actually light that originated millions or even billions of years ago. तो जो हम तारों को देखते हैं आज रात में वो मिलियंस साल पहले की लाइट को हम देख रहे हैं And those stars may not even be in existence any longer. और उसमें से कुछ तो स्टार्स ऐसे हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं But we won't see that until the light reaches us. और हम जब वो तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक वो लाइट हम तक पहुंचती नहीं है So this is like, wow. There's so many things that we don't know. तो इसमें कितनी सारी चीजें जो हम जानते नहीं है So if you don't know about this business, तो अगर आपको पता नहीं इस बिजनेस के बारे में don't quit. तो क्विट मत करो If you know this business as much as I and all the diamonds in front know, और अगर इस बिजनेस के बारे में उतना जानते हो जितना मुझे और आगे में if you have been in the business and have seen as many as we know, as we seen, और आप इस बिजनेस में वो सब चीज देख चुके हो जो हम लोग देख रहे हैं you wouldn't be able to sleep. तो आप tonight. तो सो नहीं पाओगे आज रात को This is huge. ये बहुत बड़ा है And unfortunately, out of the many people that join amway और who fail, और बहुत सारे लोग जो एमवे ज्वाइन करते हैं और फेल हो जाते हैं and when they are asked why they fail, और उनसे जब पूछा जाता है कि वो फेल 70% of the people who fail 70% लोग जो फेल होते हैं because they do nothing. वो इसलिए कि वो कुछ करते ही नहीं है They don't even sponsor वो anyone. किसी को एक स्पॉन्सर भी नहीं करते No wonder there are so many people fail in this business. आश्चर्यजनक बात नहीं कि इतने सारे लोग क्यों इस बिजनेस They don't even do anything in the first वो place. कुछ करते ही नहीं है पहले And 20% of the people who fail, और उसमें से बचे 20% जो फेल करते हैं they do something but they do the wrong thing. वो करते हैं कुछ लेकिन सब उल्टा पुल्टा करते हैं And out of only 10% who fail, और जो 10% सिर्फ जो फेल they करते do हैं the right thing, वो सही चीजें करते हैं but they don't do long enough. लेकिन वो उसको ज्यादा समय तक नहीं करते So you can never fail in this business. तो आप इस बिजनेस फेल नहीं कर सकते You can only quit from आप this सिर्फ इस business. बिजनेस को छोड़ सकते हैं And don't let anybody steal your dream. और किसी को अपना सपना चुराने मत दीजिए There is a story about this young lady who wants to be a great ballerina. एक स्टोरी एक लेडी के बारे में जो कि And then she wants to पहले know, डांस पर करना चाहती she है wants to know whether she is a really truly great ballerina. और वो जानना चाहती है She कि वो can be a great ballerina. So one day at her town, there is a troupe of ballet and also with the master. तो उनके शहर में एक मास्टर आते हैं बैले डांसर के तो So she asked the master, मास्टर से पूछती हैं can you please see me how I dance so that you can tell me how can I be, how good I am, तो क्या आप मेरा डांस देख के हमको बचा सकते हैं कि हम कितने and whether I can be a good ballerina. और हम आगे बन के एक अच्छा डांसर बन सकते हैं कि नहीं And then the master said, okay, और मास्टर ने कहा, dance "ठीक है." for me. बोला डांस कीजिए मेरे लिए So the young lady starts to dance. और वो डांस करती है Only after 1 minute, और 1 मिनट के बाद ही the master said, no, मास्टर कहते नहीं 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 your dance is not good. तुम्हारा डांस अच्छा नहीं है You don't have what it takes to become a great ballerina. तुम्हारे अंदर वो चीज हुनर नहीं है जो एक बड़े डांसर के लिए है। So broken hearted, the young lady goes home, तो उस लेडी का दिल टूट जाता है वो घर जाती हैं throw away the ballet suit, the dress, ड्रेस सब फेंक देती हैं and she just become a normal lady. और वो फिर She lost her dream. अपना ड्रीम छोड़ देती हैं Many years later, she got married, have children, बहुत साल बाद तो शादी करती हैं बच्चे होते working in the shop. हैं, एक दुकान में काम करती हैं One day, the same ballet troupe came again फिर से एक दिन एक वो बैले ट्रूप आता with the है same master who became already old. वो उसी मास्टर के साथ आई थी जो So this young lady who now become quite old, she was very furious and anxious. Why is it that he only saw 1 minute and then he told me that I'm not a good ballerina dancer? तो उन्हें बहुत गुस्सा आया ये सोच के कि 1 मिनट के डांस में देख करके उसने कैसे बता दिया कि मैं एक डांसर नहीं बन सकती हूँ So तो
she came approaching him and asked him, तो वो फिर से उनके पास जाती है और पूछती है यही सवाल, can you tell me, do you remember me? क्या आप याद रखते हैं हमें? The old man said, no, I don't remember you. उसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी याद नहीं है. I just wondering, why did you say that I don't have a talent? You only saw me 1 minute. तो आप 1 मिनट में कैसे ये जान पाए कि हम एक अच्छी डांसर नहीं बन सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ. And then the master said, oh, I always say that to तो मास्टर ने कहा, anybody. मैं तो ये हर आदमी को यही बोलता हूँ. Whenever people ask me for my opinion, I always say that you don't have any talent. तो जब भी कोई मेरे पास आता है मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हें अंदर टैलेंट नहीं. Wow, the lady was so angry. तो लेडी बहुत गुस्सा थी. This is not fair. ये तो सही बात नहीं हुई. I could have been a great ballerina. मैं एक बहुत अच्छी डांसर बन सकती थी. You crushed my dream. आपने मेरा ड्रीम तोड़ दिया. The old man said, no. ओल्ड मैन ने कहा नहीं नहीं. If you really want to be a great ballerina, अगर आप वही में वाकई एक अच्छा डांसर बनना if your चाहती हैं, dream is strong enough, अगर आपका सपना बहुत कड़ा होता, if you would not have listened to what I said, तो आपने मेरी बात नहीं मानी होती. That's why इसीलिए there will be so many people out there after this convention who will tell you that you don't have what it takes to become a diamond. तो बहुत सारे लोग हैं इस रूम के बाहर, जब आप मिलेंगे तो वो कहेंगे People will laugh at you. आप पर हंसेंगे. People laugh at me. लोग मेरे पे हंसते थे. A lot of my friends said that I was crazy and stupid doing बहुत सारे amway. लोगों ने कहा कि मैं क्रेजी और स्टूपिड हूँ इस बिजनेस को करते हुए. But don't quit. पर छोड़ना मत. While the techniques and approaches suggested have worked for others, no one can guarantee that these techniques and approaches will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This material have been published independently of Amway India Enterprise.